Hello and welcome to the highlights of 5th match of Pakistan Cup Women's One Day Tournament played between Dynamites and Strikers. The toss was won by Strikers captain Kainat Imtiaz, who chose to bat first. Here's a look at the two lineups. So we are all set. Let's join our commentators for the first ball. और आज की पहली बॉल अच्छा चिप शॉट यहां पर और इस गेंद को जो है वो क्लियर करने में कामयाब हुई हैं मिड ऑन के फील्डर को। 4 रन यहां पर आयशा नसीम को मिलेंगे और इसके साथ ही 2 ओवर्स का इख्तिताम और 11 है मजमूई स्कोर बगैर किसी नुकसान के। वेरी गुड शॉट, अनदर इम्पोर्टेंट 4 और बहुत अच्छी तरह खेला इन्होंने यहाँ पे। Straight down the ground will beat the fielder. Maham Tariq a little late, and that will result in another boundary by Javeria Rauf. Lifted and lifted beautifully over mid-on. Another boundary. That is an exquisite shot by Aisha Zafar. Driven hard, and that will beat the fielder at short cover. Exquisite drive by Aisha Zafar. Beautiful shot that got to the pitch of that ball. Bit of width outside off stump. Driven hard and driven beautifully through the mid-on area, mid-off area for 4 runs. बहुत दूर था, कोशिश जरूर की थी लेकिन ये गेंद चली गई 4 रन के लिए। तो एक और बाउंड्री आयशा जफर की जानिब से। बिल्कुल जी, आयशा जफर इज राइट इन फॉर्म। बड़ा अच्छा मुझे लगता है नाश्ता कर आई हैं, बिकॉज आयशा जफर इस वक्त दमदार बैटिंग करती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर कैच आउट हो सकती हैं, खतरा, और ये खतरा नहीं टला। विकेटों के पीछे कैच लिया सोहा ने और यूं एक पहली कामयाबी मिल गई है स्ट्राइकर्स को। जी हाँ, स्वीप करने के लिए गई थी लेकिन कामयाब नहीं हुई, प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर सकी। विकेटों के पीछे आकर सोहा ने बड़ा अच्छा कैच लिया। गेंद थोड़ी देर हवा में रहा और जज करने के बाद बिलाखिर इस कैच को थाम लिया। यूं जवेरिया रऊफ 30 रन बनाने के बाद वापस डगआउट में। इस बार कैच आउट, पहली स्लिप मौजूद थी और इस तरह एक और कामयाबी मिल गई। ड्राइव करने के लिए गई, गलती कर गई हफ्सा और स्लिप पर कैच दे बैठी। बिल्कुल जी, बहुत बेहतरीन तरीके से गुलाम फातिमा ने यहाँ पे डिसीव किया हफ्सा को और हफ्सा जो है वो नहीं समझ पाई गुलाम फातिमा की बॉलिंग यहाँ पे। और जिस तरह गुलाम फातिमा बॉलिंग कर रही हैं ये काफ़ी बड़ी थ्रेट हैं। जी हाँ, आप देखें तो इनफैक्ट इन्होंने बॉल को फ्लाइट दी थी और ड्राइव करने के लिए थी हफ्सा खालिद, जो 3 रन बनाने के बाद आउट हुई। हमना ने स्लिप पे ये बिलाखिर कैच जो था वो थाम लिया। Beautifully driven, that is along the carpet down to long on for a boundary. Beautifully cut away for a boundary by Kainat Imtiaz, so she gets back into groove again. She's been out of the form throughout the tournament, but now Kainat Imtiaz is slowly and steadily coming back into the form. This time drilled hard down to long on. There's a chance for fielder and she misfielded that one, so it's a boundary for Aisha Zafar. And Maham had a chance at deep long on to cut the ball off, but she could not capitalize on that. So it's another boundary for Aisha Zafar. She moves to 57. Full toss on leg stump, nicely placed away to the fine leg fence. Another misfielding, so it's another boundary for Aisha Zafar, and she now moves to 61. She has connected that well enough. The gap between both fielders at mid-wicket and long on. It's another boundary for Aisha Zafar. She moves to 65. This is the 3rd boundary of the over. Once again down the leg side, but she's stopped on. A wicket for Horena. A lucky escape for Horena. And finally Aisha Zafar, after playing a splendid knock of 65, she departs now. Very, very unlucky for Aisha Zafar. A beautiful knock by her. 65 of 66 balls.
There was a chance for fielder at a short extra cover, but she could not stop that. So it's a welcome boundary for Hani. She was looking in pressure because she could not score runs, but it would be important to see that this boundary would release her pressure. Nicely cut away. There's a fielder placed at mid-off, a chance, and there's a fumble. So a complete mix-up from the both batters. And it's a run out, a needless run out for strikers, but once again Dynamites will take it anyway. Yes, that was comedy of errors really. The shot played straight to the fielder. Kainat Imtiaz immediately went for that run. I think it was not her call actually. She kept on running and the throw came in, which Alia Riaz missed initially. Luckily the ball was still nearby and she picked it up, recovered and dislodged the bails. So another loss for the strikers, needless run out. क्विक सिंगल और एक और रन आउट होने का चांस और फिर कंफ्यूजन. स्ट्राइकर्स इस वक्त बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में. I mean कि आप ये देखें कि मुझे जो एक चीज़ है, ठीक है आप यहाँ पर रन आउट हुई हैं, कायनात ने जिस तरह ये लिया और उसके बाद इनफैक्ट रन लेना चाह रही थी, दूसरा फिर मना कर दिया. एज और प्रॉबेबली चौका होगा ये. फील्डर के पास कोई चांस नहीं. पेस महम की इतनी थी कि एज भी जो है वो बाउंड्री के पार जाए. That is trying to heave it up in the air and that is gone. That is Natalia trying to accelerate, trying to push for some runs. Played a shot which was not there. Not a half volley, it was a good length ball. She tried to heave it over long on or something, but totally missed it. That was a top edge. So the end of Natalia Parvez for 8 runs of 25 deliveries. Oh, what a beautiful that shot is. Through the covers, classic cover drive. Got to the pitch of the ball, drove it beautifully all along the ground. 4 more runs. पावरफुल बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, लेकिन खूबसूरत अंदाज से खेल दिया है इसको और कोई मौका नहीं मिड ऑफ के फील्डर के पास. 4 रन हासिल किए हैं. एक वेलकम बाउंड्री है कायनात इम्तियाज के लिए. खूबसूरत शॉट, यहाँ पर कोई मौका नहीं मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास. 4 रन्स और कायनात इम्तियाज जो कि इस टूर्नामेंट में कुछ बेहतर फॉर्म में नहीं थी, इस मैच में उन्होंने अपनी खोई हुई फॉर्म बहाल की है और गेंद को खेल दिया है. बॉलर्स बैक ड्राइव, मिड ऑफ के फील्डर के पास कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई है यहाँ पर 4 रन्स के लिए. तो वंस अगेन तूबा की जानिब से हम देख रहे हैं कि वो बिल आखिर अपने ग्रूव में वापस आ रही हैं. जो आखिरी ओवर्स में इंटेंट दिखानी चाहिए थी वो दिखा रही हैं. गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन पेयर, फील्डर वहां पर मौजूद और एक अच्छा कैच नशरा संधू का और इसके साथ ही तूबा की एक अच्छी काबिज यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुई. खूबसूरत हीव यहाँ पर कायनात का, लेकिन मिड विकेट पर फील्डर वहां पर मौजूद. दूसरे रन की कोशिश, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और यहाँ पर रन आउट हो गई हैं. 73 बॉल्स पे 57 बना के कायनात इम्तियाज रन आउट बाय इंशरा. गेंद को उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब और गेंद फेंस से बाहर जाकर गिरी. एक शानदार छक्का यहाँ पर आयशा नसीम का. नहीं है कि क्या आयशा नसीम हदफ तक पहुंचा पाएंगी. एक थिक आउटसाइड एज और गेंद थर्ड मैन फर्स्ट पर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई है यहाँ पर. तो आयशा नसीम जो इनिंग्स के लेटर फेज पर आई हैं, लेकिन उनका इंपैक्ट जो है वो देखा जा रहा है. अब तक 5 गेंदों पर 13 रन स्कोर कर चुकी हैं आयशा नसीम. को खेला है लॉन्ग ऑन पर, फील्डर गेंद को फील्ड करेंगी और दूसरे रन की कोशिश और उसमें कामयाब हुई हैं आयशा नसीम. तो इसके साथ ही इनिंग्स का इख्तिताम हुआ है. स्ट्राइकर्स के लिए बेहतरीन इख्तिताम यहाँ पर आयशा नसीम की जानिब से, जिन्होंने बेहतर हिटिंग की और अपनी टीम को 237 के मजमूई स्कोर तक पहुँचाया 50 ओवर्स के इख्तिताम पर.
Strikers have posted a total of 237 in their 50 overs, having lost 8 wickets. Aisha Zafar top scored with 65 runs, and skipper Kainat Imtiaz displayed a mature innings of 57 despite a fall of wickets. Dynamite's bowling card has less to take away here, with Ghulam Fatma taking 2 for 30 and Maham Tariq's 2 for 47. So Dynamites are poised for a target of 238. Let's watch their response. Oh, good start for Muniba. Punched it outside off stump. Back foot punch, which the cover fielder was unable to stop. It went through the gap. 4 more runs. Good shot this time. A bit of width offered, and she goes for that cover drive. Not a drive actually, that was just a slight push on the back foot, and very well timed through the covers. 4 more runs. A bit of flight over mid wicket. Sadaf goes over that gap in between mid wicket and mid on. Beautifully driven this time through covers. 4 more runs. This time Hani pitched it up down the track this time. Heaves it over long on. What a huge 6 that is. Beautiful shot, using her feet, getting to the ball and hitting it straight. Flighted, but equal to the task. Cuts it beautifully through that gap between point and gully. 4 more runs to Muniba. Driven once again through the covers this time. Beautiful shot, half volley, pitched up, coming onto the front foot, driving it beautifully, not overhitting it, just timing it nicely. वेरी गुड बॉल, और बहुत अच्छी यहाँ पे एक विकेट हासिल की है फातिमा ने. मैंने कहा जैसे आज लग रहा है कि फातिमाओं का दिन है. सदफ शम्स 13 रन बनाने के बाद वापस लगआउट. बहुत अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट ये लगाया है, और बाउंड्री के लिए गई है ये बॉल. जोरदार शॉट लगाया एक दफा फिर से कायनात ने, और बाउंड्री के लिए दौड़ती हुई गई ये बॉल. जोरदार शॉट, और जिस तरह हम बार बार बात करते हैं कि पावर हिटिंग, पावर, जान से मारना, हमें जान से मारती हुई दिखती नहीं है. Half volley this time. Oh, what a beautiful catch that is. Tried to go over that mid-off fielder, but Natalia came in the way. What an exceptional catch. Dive to her right to grab that catch and dismiss the sort of catches you need to take if you want to get the opposition under pressure. It's exactly that sensational catch brought to the end of a fine knock from Kainat. Look at that, trying to drill straight down the ground onto his right. Clinched an absolute thriller. Kainat Hafiz walks back for a well-made 14 from 22 deliveries, and now Dynamites 62 for the loss of 2 wickets. Flight, but overpitched this time, makes it into a full toss, driven through the covers. 4 runs. Tossed up, full toss, bad ball down the leg side, helped on its way by Muniba for 4 more runs. That's square leg. Short this time. Alia goes on the back foot, drives it just square of that mid wicket area, in the gap. 4 more runs. और इसका पूरा फायदा उठाया है फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन रोकने में नाकाम. 4 रन यहां पर मिल गए. आलिया को मिले फ्री हिट का मौका, और जब फ्री हिट हो तो आलिया क्यों नहीं इसका फायदा उठा सकती हैं.
कदमों का इस्तेमाल किया था और बिल्कुल अंपायर के सर के ऊपर से खेली हैं, लेकिन इस दौरान लॉन्ग ऑन से आई ज़रूर थी आयशा, लेकिन अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सकी और एक और चौका लगाने में कामयाब रही यहाँ पर। और इस बार इनफैक्ट रन आउट की जो अपील थी वो कामयाब रही, क्योंकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बिल्कुल भी पता नहीं चला मुनीबा को कि वो आउट हो गई हैं। शॉट खेला और रुम्यानी के हाथ से गेंद लगने के बाद लगा स्टंप्स पे और अंपायर ने कहा यस शी इज आउट। Unlucky, very unlucky. Muniba was looking solid today. Muniba ने हाफ सेंचुरी अपनी अभी कंप्लीट की, एक रन और सिर्फ बना सकी थी और नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े आप आउट हो जाएं। वेल इसको बिल्कुल अनलकी कहेंगे, लेकिन मुनीबा ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं, 51 रन की, 5 चौके और 1 छक्का लगाया। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार और फील्डर गेंद के नीचे हैं, क्या कैच होगा? बिल्कुल ये कैच लिया और इस तरह एक और कामयाबी मिली है। आलिया रियाज की विकेट गिर गई है जो खतरे की अलामत बनती जा रही थी और इस तरह से नतालिया परवेज ने कैच लेकर इनिंग्स का खात्मा किया आलिया की। So आलिया रियाज गोइंग बैक टू द हट, 29 रन्स बना के 35 बॉल्स। इस बार बड़ी जोरदार अपील और अंपायर ने कहा यस और इस तरह एक और विकेट यहां पर मिल गई। कॉट बिहाइंड की जो कोशिशें जारी थी बिलाखिर तूबा की कामयाब रही और इस तरह एक और विकेट मिल गई है स्ट्राइकर्स को। इस बार जोरदार अपील यस, अंपायर ने बिल्कुल किसी सोचो विचार की अपनी उंगली फिजा में बुलंद कर दी और फौरन ही कहा कि हुरैना सज्जाद आउट है, लेकिन हुरैना सज्जाद को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि किस तरह से उनको अंपायर ने आउट दिया है। बिलाखिर बोझल कदमों के साथ वापस। Around the legs, bowled her. We've seen a similar dismissal in the first innings and now just trying to deceive it. And Soha Fatma had no answer. Yes, exactly. Things are going in the striker's way and no luck for Dynamites today. As it has always been throughout the tournament, they are unlucky. Look at that, played across the line. It was down the leg side, only for scoring a single run of 6 balls. It's 121 for the loss of 7 wickets, Dynamites. Use of the feet, yes, just enough. Over the top of mid-off, goes for 4 runs. Lucky and crucial runs coming from Maham's bat. Cut away, will beat the fielder. It's through the gap for 4 runs. Nashra was given width and she punished it. Tossed up, driven hard, beats the fielder at cover area, and that will be a welcoming boundary for Dynamites. Maham gives some room, and that's beaten the fielder. Got some hand on it. It will reach the boundary eventually. Good runs for Maham Tariq. She continues on attacking the strikers. और इस बार बोल्ड कर दिया कायनात ने और महाम की बिलाखिर अब विकेट यहां पर मिल गई है। टेक्निक की अगर आप बात करें तो ये महाम तारिक 24 रन 28 बॉलों में बनाकर आउट हुई। वो डायरेक्ट हिट और आउट, अंपायर का इशारा आउट। जैसा कि हमने देखा और हम पहले भी देखते आए हैं कि डायरेक्ट हिट जो है वो हमेशा एक सनसनीखेज लम्हा मुहैया करती है मैच में। ये आप देखें, हल्का सा मिड विकेट की तरफ पुश किया था, सिंगल के लिए भागी और बहुत अच्छा डिसीजन अंपायर का, बिल्कुल ग्राउंड से बाहर थी फातिमा। Boulder! And that's the first win for strikers. Tuba Hassan has been brilliant and outstanding. Played a crucial role in the win for strikers, and Dynamites all done and dusted on 172. Dynamites could not measure up to this chase and bundled out for 172. Skipper Muniba Ali top scored with 51 of 70 balls. A great batting display by strikers earlier was matched up by their bowlers after restricting Dynamites for 172.
Tuba Hassan having a great day with 4 for 28. Fatma Hassan claimed 2 scalps too. So strikers claiming the first points of the tournament after a convincing victory over Dynamites at the National Stadium, Karachi. We hope you enjoyed these highlights. Till next time, it's goodbye.